So very good evening all the participants. Today we'll start with section 11. But before we start with section 11, so I would like to ask you a question on section 10A. So section 10A talks of suspension of CIRP during COVID period. So suppose a default has occurred prior to this 25th March, because it says no application for initiation of CIRP shall be filed for any default arising on or after 25th March for a period of 6 months or such further period not exceeding 1 year from such date as may be notified. Provides that no application shall ever be filed for initiation of CIRP of a corporate debtor for the said default occurring during the said period. And explanation says, for the removal of doubts, it is hereby clarified that the provisions of this section shall not apply to any default committed under the said sections before 25th March. So first question on section 10A. Suppose the default has occurred on 20th of March 2020. So whether you can file the application during COVID period? No, sir. Default has occurred on 20th of March. So whether you will be able to file the application? No, sir. No, sir. Why? So, sir, only for 1 year. During the COVID period, we are not supposed to file. Even that But it says, no. I think you are having a copy of the bare code with you. It says, for any default arising on or after 25th March. So it is also qualified by the words for any default arising on or after 25th March. My question is, default has occurred on 20th of March. So whether I can file an application on 30th of March, this is my question. फाइल सर फाइल कर सकते हैं ना? क्यों अंकिता जी? Ankita ji, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Can we file? Yes, sir. Yes. Okay. And the reference here is to for initiation. It says no application for initiation of CIRP shall be filed. So the point here is that you cannot file an application on or after 25th March. Now section 11. Section 11 talks of persons who are not entitled to make application. Suppose a company, let me share that PPT itself. इससे होगा नहीं, उसी से clarity ज़्यादा आएगी. So let me share that PPT of bare code and regulations. वही clear it रहेगा. यहाँ से कोई थोड़ा confusion हो सकता है. So bare code and regulations. Section 11. So we'll try to do it in question answer format so that it is easier to understand rather than I'm speaking and you are just listening. So section 11. Yes. So section 11, persons who are not entitled to make the application. The following persons shall not be entitled to make an application to initiate CIRP under this chapter. Corporate debtor undergoing CIRP or pre-pack. Can you give the example of 11A? Saif, can you give this example? Corporate debtor undergoing CIRP or pre-pack. सर किसी की मतलब हाँ जी सीआरपी स्टार्ट होगी एप्लीकेशन चली गई है हाँ उसके बाद मान लो कोई ऑपरेशनल कैरेक्टर है या कोई और एप्लीकेशन देता है तो उसकी हाँ एप्लीकेशन नहीं यहाँ पर वो एग्जांपल नहीं फिट होगा ना. आप एग्जांपल
एग्जाम्पल तो आप दे रहे हो पर करेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे रहे। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल होगा, कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग। कॉर्पोरेट मतलब डेटर नहीं कर सकता मतलब, है, कॉर्पोरेट डेटर नहीं। हाँ, आपकी सेक्शन 7 एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, सेक्शन ठीक है। 9 एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, देन हम्म। सीडी shall not file an application, CD cannot file an application under section 10। इसका ये एग्जांपल है पहले का। ठीक है जी, ठीक है। क्लियर है। नाउ सेकंड, सेकंड का एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एग्जांपल्स तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेकंड इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब दूसरा जस्ट रिवर्स हो गया, जो पहला हमने एग्जांपल देखा था अब उसका जस्ट रिवर्स हो गया। क्या बोला, फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ अ सीडी अंडरगोइंग ए प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बिकॉज इन केस ऑफ प्री पैक only the corporate debtor can file the application. So, but in case of pre-pack, there are two options available with the CD. Pre-pack, as we know, is restricted to corporate MSMEs only. Okay? And the minimum amount of default there is 10 lakh 10 rupees. lakh rupees. But there is no maximum limit. So, suppose the default is of 2 crore rupees. Now, this corporate MSME has got two options, either to go in for pre-pack or to go in for normal CIRP. So in this case, it says, suppose there is a corporate MSME. Now it is already undergoing pre-pack. Now the financial creditor or operational creditor of such corporate debtor which is undergoing pre-pack, it cannot file an application. That means this default here was more than 1 crore, 1 crore or more. So otherwise, financial creditor or operational creditor could have filed. But now since the corporate debtor is undergoing pre-pack, so financial creditor or operational creditor cannot file. ये भी पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, अनिल जी, तो दोबारा क्लियर हो सर इसको। देखिए ऐसा है। सर फर्स्ट वाला दोबारा बोल दीजिए, उसके बाद सेकंड वाला बोल दीजिए, देन हाँ फर्स्ट वाला एक बार रिपीट कर लीजिए सर। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट वन। वाला एक बार रिपीट कर ओके लीजिए, ओके ओके कॉर्पोरेट डेप्ट। ओके। इट सेज a corporate debtor undergoing a CIRP or pre-pack. Suppose a corporate debtor is under CIRP application can be filed by three types of persons. ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 और a class of creditors under section 7, by operational creditors under section 9 and by the CD under section 10. So let us assume a situation that CD is already undergoing CIRP. That means the application might have been filed by the financial creditor or operational creditor. So in that case, the question is, if a company, if a corporate person is already undergoing CIRP, for which application has been filed under section 7 or 9, whether the corporate debtor can file the application under section 10? The answer is no. No. This is precisely what is meant by 11A. Second is, a corporate debtor is undergoing pre-pack. Pre-pack, as we know, is restricted to corporate MSMEs only. So a CD which is undergoing pre-packaged insolvency resolution process, in that situation, financial creditor or an operational creditor cannot start this process, shall not be entitled to make an application. Because in case of pre-pack process also, the minimum amount of default is specified, but the maximum amount is not specified. That means there are two options available, CIRP or pre-pack, for those who are corporate MSMEs. ठीक है, suppose there is a corporate MSME which is entitled for pre-pack insolvency resolution process. Default amount is 2 crores. First question, whether financial creditor can file the application under section 7 in case of corporate MSMEs? The answer is yes. Whether an operational creditor can file the application? The answer is yes. Whether section 10 application can be filed? The answer is yes. But now what is the difference?
between section 10 and pre-pack. In section 10, the control will be shifted to the RP. But in pre-pack, the control will remain with the corporate debtor and the RP will be acting as monitor. He will be monitoring the activities unless the corporate debtor is doing some fraud. ठीक है? Clear है ये वाला point? Yes, sir. Now next point, corporate debtor having completed CIRP. So in this case, CIRP has just been completed. You assume a situation, a patient has come just out of hospital. So whether you can do second operation, you will have to wait for some time. So this is exactly the situation. So this CD has just completed the CIRP. So 12 months have to be given. Maybe for implementation, maybe for bringing it on the natural normal course. So it says if a CD has completed CIRP 12 months preceding the date of making of the application, so then he cannot make an application. सर सीडी नहीं कर सकता है, दूसरी भी नहीं कर सकता सर इस केस में? देखिए ऐसा है, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा. अच्छा जी. आप आगे और देख लेते हैं ना. और ए कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड. ठीक है, एक सीडी ऐसा है जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ये प्री पैक. सो इन केस ऑफ प्री पैक ऑल्सो इफ द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, चैप्टर 3 टॉक्स ऑफ प्री पैक 12 months preceding the date of making of the application. अच्छा, next, a corporate debtor or a financial creditor who has violated any of the terms of the resolution plan which approved 12 months before the date of the making of the application. So if there is a corporate debtor or a financial creditor who has violated any of the terms of the resolution plan which was approved 12 months before the date of the making of an application. So here the question arises whether an operational creditor can file this application, because they are restricting only two persons, corporate debtor और फाइनेंशियल क्रेडिटर. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि भाई ऊपर कहीं कवर हो रहा है ऑपरेशनल क्रेडिटर या नहीं. ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ऊपर वाले प्रोविजंस देखते हैं. तो 12 मंथ्स बिफोर में क्या है? 12 मंथ्स बिफोर में बोलता है ए कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP. A corporate debtor in respect. So I think operational creditors can be allowed here. So operational creditor can be allowed. क्योंकि यहां पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन इज ऑन कॉर्पोरेट डेटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर. और ए कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a liquidation order has been passed. So if a liquidation order has been passed, then you cannot file an application. For the purpose of this section, a corporate debtor includes a corporate applicant in respect of such corporate debtor. ठीक है. Explanation 2. For the purposes of this section, it is hereby clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor referred to in clauses A to D from initiating CIRP against another corporate debtor. Now what is the meaning? Anil ji, इसका meaning क्या है? Explanation 2. सर ये कंपनी जो है मतलब बी कंपनी के अगेंस्ट कर सकती है सर? Right. So if a company, there is company A which is undergoing CIRP, but it has got certain dues which are recoverable from company B. So the question here is whether company A can file an application under section 7 or 9 against company B. The answer is yes. So a person who is in hospital, he can disturb others, but he cannot be disturbed. ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 11. अब सेक्शन 11 में देयर इज ओनली वन पॉइंट कि वेदर एन ऑपरेशन, लेट अस टेक अ केस, इट सेज if we see 11C says a corporate debtor or financial creditor who has violated. So the question here is whether an operational creditor will be able to file the application under 11C. If we see section 11C, so it talks of only corporate debtor and financial creditor. So the question here is whether an operational creditor will be able to file.
So clause A. Let us read from clause A. Clause A says a corporate debtor undergoing CIRP or pre-pack. So in clause A, whether that means other applicants can file an application for initiating CIRP against the corporate debtor undergoing the process of insolvency resolution. Because it says corporate debtor undergoing CIRP. Okay? Because actually the language is that the corporate debtor cannot file. But the point is, if a CD is already undergoing, then another CIRP cannot be started. सिंपल है. एक ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता ना उस टाइम, बल्कि वो तो 12 महीने और कहता है वेट करने के लिए. ठीक. नाउ सेक्शन 11A. 11A talks of disposal of applications under section 54C. So this section will be more clear when we will read the PPIRP provisions. PPIRP में क्या है? Because PPIRP, if I say in one or two lines, pre-pack is a process which is favorable for the corporate MSMEs. So it allows the corporate debtor to file an application under pre-pack whereby they themselves can put up the resolution plan, or either on its own or in by joining hands with some other persons. So the question here is, because this PPIRP came after COVID period. It was issued by way of a notification on 9th of April. So the point here is, if an application under section 7 or 9 or 10 is already pending, and now this pre-pack process has come, another variant has come, so the corporate debtor will naturally like to avail this opportunity. So section 11A talks of this intervening period, that pre-pack has come, but the section 7 or 9 or 10 application is already pending. So the first situation is application filed under 54C is pending. That means pre-pack application has been filed first. So the gist of section 11A is that pre-pack will be given preference. Okay. First situation is pre-pack is pending and then 7, 9, 10 filed. Then pre-pack will be given preference. Okay. Before considering an application under 7, 9 or 10. Second, 54C pre-pack is filed within 14 days of filing of the application. Why this 14 days is important? Because 14 days is the time period for the adjudicating authority to decide on the application. So in second situation, pre-pack is filed within 14 days. So then also the pre-pack will be decided first. Third situation, pre-pack is filed, pre-pack application is filed 14 days after the filing of the application. So in that case, 7, 9 or 10 shall be decided first. This is the meaning. Okay. And the provisions of this section shall not apply where an application under section 7 or 9 or 10 is filed and is pending on the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2020. ठीक है, clear है. तो जो पुराने, because it has got this prospective effect. Now section 12. Section 12 में subject to subsection 2, the CIRP shall be completed within a period of 180 days from the date of admission. So 180 days is the period. Whether extension can be granted? Yes. So extension can be granted, but whether RP can file the application on its own or it has to obtain the approval of the COC. So it has to be by way of a resolution passed at a meeting of the COC by a vote of 66% of the voting share. That means if they ask you a question whether IRP can file the application for extension, the answer is no. So RP shall file the application, but if a resolution to this effect is passed at a meeting of the COC by a vote of 66%. Still, it is the discretion of the adjudicating authority. So it may by order extend. Okay? By such further period as it thinks fit, but not beyond, not exceeding 90 days. Now, what happens is this
this CIRP was not getting completed in most of the cases in 180 days or even in 270 days. Then what the RP was doing? So RP was filing an application for exclusion of certain time period, and it became more or less a practice. So then a second amendment was introduced, second proviso was introduced, and it said the CIRP shall mandatorily be completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including an extension of the period of CIRP granted under the section and the time taken in legal proceedings in relation to such resolution process of the corporate debtor. So they said you mandatorily complete it in 330 days. But the Supreme Court has said that even this 330 days period is not mandatory, it is also directory. Okay. Now this 330 came at a later date. So it says where the CIRP is pending and it has not been completed, then 90 days shall be allowed. Section 12A. Section 12A talks of the withdrawal of application admitted under section 7, 9 or 10. Now what it says? First question. Suppose you are a financial creditor. You have filed an application, but it has not yet been admitted. So whether you can withdraw that application? Yeah. Under which section? एडमिटेड से रिजेक्ट होगी फिर उसमें क्या? Yes. So suppose you are a financial creditor. You have filed an application. The corporate debtor makes you the payment. So you are no longer interested in pursuing the application. So you will simply file an application before the adjudicating authority that I want to withdraw my application because it has not yet been admitted. Okay. So it will be by way of an application. Now section 12A. Section 12A talks of a different situation. It says once an application has been admitted, then whether it can be withdrawn? The answer is yes. Earlier this provision was not there because whenever the word A is suffixed to any section, that means that was not the original section. So that section was introduced at a later date like 12A, 238A, 29A, 32A, etc. etc. 10A. Okay? So 12A, it says the adjudicating authority may allow the withdrawal of application admitted under section 7, 9 or 10 on an application made by the applicant. So who has to make the application? The application has to be made by the applicant with the approval of 90% voting share of the committee of creditors in such manner as may be specified. So it says with the approval of 90%. Suppose COC has not yet been constituted. Then what will happen? Application has been admitted. You are inviting claims because 14 days period is there for inviting claims. Then 7 days period is for verification of claims. So during this period, when no COC is there, because it talks of a situation of 90% of the voting share of the committee of creditors. So if an application has been admitted, but there is no COC, whether you can still withdraw the application? The answer is. And the answer is given in regulation 30A of CIRP regulations, which says that the applicant can withdraw the application. And there is no question of 90% because COC is not there. And in case COC is there, then with the approval of 90%. So what will happen to the expenses which have been incurred in between? Suppose this application has been admitted, you have made public announcement, you have incurred certain expenses, then who will bear those expenses? Corporate debtor bear करेगा sir? The applicant will bear the expenses. The applicant will bear the expenses. Suppose he has filed an application under section 9. So naturally, so the applicant will bear the expenses and he will give the bank guarantee towards the estimated expenses. Now, section 13. Section 13 says declaration of moratorium and public announcement. The adjudicating authority, after admission of the application under section 7, 9 or 10, shall by an order declare a moratorium for the purposes referred to in section 14. So there are certain purposes which talks of moratorium. Cause a public announcement of the initiation of CIRP and call for the submission of claims under section 15 and appoint an IRP in the manner as laid down in section 16.
the public announcement shall be made immediately after the appointment of the IRP. And immediately means here not later than 3 days. Why? Where this is written? This is written in the regulations. Now section 14. Section 14 puts on hold certain actions. Now this patient has been admitted into the hospital. So you should not disturb him. This is moratorium. Okay. Subject to the provisions of subsection 2 and 3, on the insolvency commencement date, the adjudicating authority shall by order, but there is another angle to this. It says moratorium shall be on the insolvency commencement date. Suppose an application has been filed, but it has not yet been admitted, then whether a suit could be filed? Yes. The answer is yes. So this moratorium will come into effect on the insolvency commencement date. Okay? Declare moratorium for prohibiting all of the following, namely institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor, including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority. So you cannot, institution means new filings. You cannot file new suits. You cannot continue with pending suits or proceedings against the corporate debtor. But whether you can file a suit against the director, Yes. because it prohibits action against the corporate debtor only. So the related question is whether you will be able to initiate proceedings against the directors of the corporate debtor. The answer is yes. Okay. Including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration or other authority. Second is transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor. So who is transferring, encumbering, alienating or disposing of? The CD. Any of its assets or any legal right or beneficial interest therein. So application has been admitted. Moratorium is there. So during this period, whether the CD can transfer his assets? The answer is no. Whether the CD can create charge against his assets? The answer is no. Whether CD can alienate his assets or dispose of? The answer is no. Okay. Next is any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property, including action under SURFACE. So let us understand it by way of an example, because this SURFACE is applicable only in case of secured loans. Suppose there is a company XYZ Limited and it has taken a secured loan from PNB. Now, whether PNB can take action under SURFACE during this period? The answer is no. Any action to foreclose, recover or enforce any security interest. So who will recover? Naturally the banker, the party in whose favor interest has been created. So they are also barred from any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the CD in respect of its property, including any action under SURFACE. Okay. Suppose the CD wants to make prepayment. The answer is no. He cannot make prepayment. He cannot foreclose the account. Okay. Recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. Suppose the company is running from rented premises. Now, whether the landlord can ask the party to vacate the premises? The answer is no. It says recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. Suppose CD is running its business from rented premises. Okay. It has taken the property on lease. So whether the owner or lessor can recover the property during moratorium period? The answer is no. Suppose he doesn't pay, this corporate debtor doesn't pay, then what action can he take? What is the security provided to him? To the corporate debtor? भाई ये कहता मैं रेंट भी नहीं दे रहा, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं खाली भी नहीं कर रहा हूं. खाली करने के बारे में तो लिखा ही है यहां पर.
तो उस सिचुएशन में क्या होगा अनिल जैन जी? सर बाद में जो उसका पैसे आएंगे इससे उसको दे देंगे उसमें से। It is covered under insolvency resolution process cost. So if we read the definition of insolvency resolution process cost, it is clear. And the definition of insolvency resolution process cost is given in the regulations also. Regulations में भी दे रखा। और डेफिनेशन कहाँ दे रखी है आपकी? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 31 ऑफ CIRP regulations. So it says amounts due to suppliers of essential goods and services. Then amounts due to a person. Regulation 31, sub-regulation B. Amounts due to a person whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium imposed under section 14(1)D. ये 14(1)D की बात कर रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। Explanation. For the purpose of this subsection, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, a license, permit, registration, quota, concession. So it says it cannot be terminated or suspended on ground of insolvency, subject to the condition there is no default in payment of current dues arising for the use or continuation of the license. A company is having spectrum license from Department of Telecom. So whether that license can be suspended during this moratorium period? What are the conditions? The condition number 1 is it cannot be suspended or terminated on the ground of insolvency. Okay? If there is any other ground, then it can be suspended. Second point, the party should go on paying the current dues. There should be no default in payment of current dues. Now, what is the meaning of current dues? The meaning of current dues is the dues after the moratorium period. ठीक है, जो ड्यूज है अप टू द moratorium period, before the insolvency commencement date, before the date of admission, so they can be claimed by filing a claim form, and current dues have to be cleared. If the company doesn't even pay the current dues, then the license could be suspended or terminated. ठीक है, the supply of essential goods or services to the corporate debtor, as may be specified, shall not be terminated or suspended or interrupted during the moratorium period. So regulation 32 is there. What regulation 32 says? If we go to regulation 32, let us quickly go to regulation 32 also. So what it says? Regulation 32 talks of certain things. क्या? Essential goods and services. क्या है उसके अंदर? Electricity, water, telecommunication, information technologies. Now suppose I am having an electricity connection and I do not pay the electricity dues. So can my electricity connection be disconnected? करंट के पैसे नहीं दिए तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए सर। करंट की भी करंट बात की नहीं करता इसमें, यही तो खास बात है। एसेंशियल में आ गए। है सर नहीं हाँ, होगा, नहीं नहीं होगा सर। नहीं होगा बिल्कुल। बट व्हाट इज द solace? The solace is that it will be covered as insolvency resolution process cost. सबसे पहले इसका पेमेंट होगा अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर्स ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई कहीं तो उसको रिलीफ दोगे ना, तो यहां पर उसको कहते हैं भाई चिंता मत करो, सबसे पहले तुम्हारे को ही पेमेंट। चलिए एक और पॉइंट है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज where the IRP or RP as the case may be considers the supply of goods or services critical. So first situation क्या आ गया?
फर्स्ट सिचुएशन में तो आ गया कि सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, परमिट, कोटा और कंसेशन, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू पे द करंट ड्यूज। सेकंड, इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। देयर इज नो मेंशन ऑफ पेमेंट। यहाँ कोई टू में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। पेमेंट करो मत करो, सस्पेंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड क्या है, देर आर सर्टन गुड्स और सर्विसेज विच आर क्रिटिकल, सो हु विल आइडेंटिफाई द IRP और RP, ठीक है। Where the IRP or RP, as the case may be, considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the corporate data and manage, then the supply shall not be terminated except where such corporate data has not paid dues arising from such supply during the moratorium period, ठीक है। तो you go on paying the current dues, then the supply cannot be disconnected. So certain transactions may be notified, and these provisions shall not apply to a surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. So if there is a surety which has given a guarantee, so then that is not covered by this moratorium. ठीक है. The order of moratorium shall have effect from the date of such order till the completion of CIRP. ठीक है. Provided that where at any time during the CIRP period, if the adjudicating authority approves the resolution plan or passes an order for liquidation, the moratorium shall cease to have effect from the date of such approval or liquidation. Now, let me ask you a question. A company is XYZ Limited. It is into CIRP. It is in the business of running a turbine, and coal is a critical input for that purpose. RP has identified coal as the critical input. The company is into CIRP. Now the coal supplier is refusing to supply the coal. He says, you clear my total dues first, then only I will give you supplies. But the RP is saying that I will go on paying the current dues, but you do not interrupt the supply because the company is in moratorium. So I will clear the current dues. So now, what is the option available in case coal supplier does not agree to this proposal? Yes, Mr. Saif. I hope you have understood my question. They can refer to arbitration authority. Huh? Is my question clear to you or not? We have just now read section 4. Let me repeat it again. Section 14. Section 14 says that there are three types of activities basically, apart from those which are given in section 14 1 to D. 1 to D we have already clear. A, B, C, D are clear. Now, suspension of quota license permit cannot be done so long as current dues are paid. Essential goods or services cannot be terminated whether we pay or not. Critical goods or services cannot be discontinued if we go on paying the current dues. So my question is on this critical goods and services. Coal supplier. So the coal supplier cannot disconnect the supply, cannot terminate the supply, cannot interrupt the supply so long as the current dues are paid. And if there is an issue, then first of all, he will try to convince the coal supplier that this is as per the provisions of section 14, which if you do not agree, then it will be considered as contempt of court, and then he can approach the adjudicating authority. Okay? Sure. But this situation will come when only there is one supplier. If there are other suppliers, he will get in touch with others. Section 15, public announcement of CIRP. So the public announcement of the CIRP shall contain the information. So there is a particular information which has to be given in public announcement. Now, as we know, companies go on changing their names. Suppose a company has changed its name during the past 1 year. So which name will be given in the public announcement? भाई कंपनी है, कंपनी ने अपना नाम बार बार चेंज करती रहती है, कई कंपनियां चेंज करती रहती है ना नाम। तो आपको पुराना नाम भी देना है या सिर्फ नया नाम देना है, क्या करना है पब्लिक अनाउंसमेंट में?
ऑल देना पड़ेगा सभी। Yes. Let us read regulation 6. Regulation 6 क्या बोलता है? Regulation 6 is the public announcement. ठीक है. And this we have to read along with form number, form A of schedule 1. So let us see form A also. तो form A क्या बोलता है? क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर दिया है तो उसको हमें कहीं देखना भी पड़ेगा ना कहीं लिखा होगा ना बात ये है फॉर्म ए। तो फॉर्म ए क्या बोलता है? नेम ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। So we need to not use this हम्म। form A. It is displayed in the screen, sir. यस। Not able to see that form A. तो दिस इज फॉर्म ए। ऋतु माहेश्वरी जी, ये कहां पर लिखी है बात कि भाई पुरानी भी डिटेल देनी पड़ेगी उसको? सपोज ए कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम, सर तो दे हैव टू गिव द प्रीवियस नेम्स आल्सो। तो बात लिखी कहां पर हुई है? कहीं लिखा है नहीं लिखा है? सर पब्लिक अनाउंसमेंट में तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा और मतलब बात लिखी भी तो होनी चाहिए कहीं। या अपने मन से लगा रहे हैं हम? मन से ही लगाया सर, कॉमन सेंस से। याद तो नहीं है कि किधर लिखा है, बट ये याद है कि पब्लिक अनाउंसमेंट में उसका डिटेल देना पड़ेगा। हम्म। Now, suppose it says you have to give the public announcement in one English and one regional language newspaper. ठीक है। The company is situated in Mangaluru. ठीक है, मैंगलोर में सिचुएटेड है। अब मैंगलोर मैंगलोर का लैंग्वेज क्या है? सर वो नहीं तो अपन ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे, जो भी नहीं नहीं ऑफिशियल नहीं, वो तो इंडिया। ठीक है। एक मिनट में आप पूछ रहा हूँ, क्या आप बता रहे, क्या क्या लैंग्वेज है वहां का, मैंगलोर का? कन्नड़ होगी सर शायद। कन्नड़ है ना? ओके। सो my question is that you gave the advertisement in Kannada newspaper but in English. So whether it is sufficient compliance? रीजनल में भी जाएगा लोकल सर। रीजनल में भी देना पड़ेगा। वन Yes. रीजनल वन इंग्लिश। Yes. So नेशनल yes, my question is that you gave the ad in Kannada newspaper, but that was published in English language. So whether it is compliance, whether it is proper compliance, the answer is no. So in the Kannada newspaper, you have to give the this public announcement in Kannada language only. यस सर। है ना? And besides that, it has to be on the website if any of the corporate data, and on the website if any designated by the board for the purpose. ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर वो उसका आंसर पुराना नेम देना है या नहीं देना है? पुराना नाम देना नहीं देना वो आपको लिक्विडेशन में सर मिल जाएगा। सर रेगुलेशन में है सर 62B3 में है। हाँ, इसमें है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द बोर्ड एंड द लास्ट नॉन एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस along with the history of name change in last 2 आप years कहां पर बोलता है? if applicable। 62B3 रेगुलेशन सर। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए ना सर, हाँ हम सबको मैं पता कर देता हूँ, मैं हाँ कर देता सर। हूँ।
सिक्सटी बी थ्री में कहाँ है? सर ये 60B3 में है सर। हम्म। B3 में है सर। नहीं, एक मिनट, आप तो कोस्ट है ना यहाँ पर, तो जी सर। आप इसको एक बार शेयर कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ सर, एक मिनट। हाँ, एक बार शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। सर इसमें नहीं होगा, ग्रुप में डाल देता हूँ सर मैं। नहीं, क्यों नहीं होगा शेयर? नहीं मैं सर आईपैड पे हूँ तो मोबाइल में है वो जो मैं देखा मैं। अच्छा। हाँ, एक मिनट। नहीं, मेरा पर्पस कुछ और था पूछने का आपसे। अच्छा। एक बार ग्रुप में डालो आप उसका फोटो खींच के। डाला सर मैंने। डाला? हाँ। देखिए, एक मिनट, ये दे दिया 62B3। सर ये दूसरा ग्रुप है क्या, हम लोग नहीं है इसमें? ये वो इवनिंग बैच वाला ग्रुप है ना, मैं उसमें डाल दूंगा कोई अच्छा। बात नहीं। हाँ ओके ओके हाँ, हाँ। ये है। तो अब आप ये देखिए वीरेंद्र परिहार जी, ये जी अमेंडमेंट सर। कब आया आपका? डेट, इफेक्टिव डेट क्या है इसकी? सर इसमें डेट नहीं है सर मेरे पास। क्यों, डेट क्यों नहीं? डेट तो होता ही है, इसके ऊपर एस्टेरिक लगा होगा, उसके नीचे होगा। बेयर कोड से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो आप? बैरकोड से नहीं देख रहा सर मैं। हैं? बैरकोड से नहीं देख रहा, मैं एक बुक लिया था उसका तो उसमें। अच्छा। सर हमारे ग्रुप में भी पोस्ट करिए ना। अभी कर देते, अभी कर देते मैडम। 62B3। हम्म। तो 62B3 जो है ना वहां पर, वो कुछ अलग है। अच्छा। B3 में एक्चुअली है क्या? भाई ये है तो सही, लेकिन ये बाद में अमेंडमेंट आ गया, बट यू हैव टू गिव द नेम। ये तो कंपनीज एक्ट में भी है, लिक्विडेशन में भी है, बहुत सारी जगह पर है। हाँ जी। उसमें तो है सर, सेक्शन 13 में भी है, कंपनीज हाँ। एक्ट में। ये जो है, ये मैंने कर दी। चलिए। ओके। यस ठीक है, सर। अब चलिए। अच्छा, इन द लास्ट 2 इयर्स ही है? हम्म। वो भी बात है। ना, वो तो है, अब मान लो 20 साल पहले कोई नाम चेंज हुआ, वो तो नहीं हम्म। चलेगा। सर अपन ने ऐसा पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये हो गया 14, अभी हम कहाँ पर थे? 15 चल रहा था ना। नाउ 16। 16 क्या बोलता है? 16 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP। ठीक है। सो बेसिकली द adjudicating authority shall appoint an IRP on the insolvency commencement date. So as we know, in section 7 or 9 application, in section 7 or 10 application, you have to give the name of the RP, the IRP, and you have to obtain its consent in form 2. But there could be two situations. In section 7 or 10, what they will ensure? They will ensure that if no disciplinary proceedings are pending against the IRP, they will appointment as IRP. But in section 9 application, the adjudicating authority will ask the board. ठीक है, बस इतनी सी बात है 16। 17 talks of management of affairs of the corporate debtor by IRP. So IRP and RP are different persons. They may be same, they may be different. IRP is there till the constitution of the COC. And in the first COC meeting, normally the COC will appoint another RP, or the same IRP may be confirmed as RP. Okay? Although the appointing authority is the adjudicating authority in every case. So from the date of appointment of the IRP, the management of the affairs of the corporate debtor shall vest in the IRP. The powers of the board shall stand suspended. So board is not being suspended. Powers of the board are being suspended.
So the point is whether they will continue to remain on MCA website. The answer is yes. So powers of the board of directors, whether they will be entitled to attend the meetings of COC, the answer is yes. Whether they will be entitled to all the information, the answer is yes. The powers of the board of directors or the part, but they cannot vote, as the case may be, shall stand suspended and be exercised by the IRP. So whatever the board was doing till now, now it will be done by the IRP. The officers and management, they shall report to the IRP and provide access to such documents and records of the CD as may be required by the IRP. ठीक है, तो इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन हो गया? IRP. पहले बोर्ड था. Now financial institution, suppose banker is maintaining account of the CD, so it shall act on the instructions of the IRP. ठीक है, in relation to such accounts and furnish all information related to the CD available with them to the IRP. The IRP vested with the management shall act and execute. Now suppose he is required to sign certain documents. Suppose he has to take part in meetings. So everything will be done by him. So whether board can conduct its board meetings during CIRP period? The answer is no. Okay? Power is suspended. But whether during pre-pack board meetings can take place? The answer is yes. Because the corporate debtor continues to stay in control in case of pre-pack insolvency resolution. But in normal CIRP, board meetings will not take place because the power stands suspended. The IRP vested with the management shall act and execute in the name and on behalf of the corporate debtor all deeds, receipts and other documents, take such actions, have the authority to access the electronic records, have the authority to access the books, etc. Be responsible for complying with the requirements under any law for the timing in force. GST filing, TDS filing, income tax filing, applying for licenses, quota, permits, everything to be done by IRP. Okay? Suppose some arbitration proceeding is going on. Who will attend those arbitration proceedings during CIRP period? IRP. IRP, right. So board need not accompany them. Board need not participate. Now section 18. Duties of IRP. The IRP shall perform the following duties, namely, collect all information relating to the assets, finances and operations of the corporate debtor for determining the financial position of the corporate debtor, including information relating to business operations for the previous 2 years. So why they are collecting this information for previous 2 years? भाई आज आपका CIRP स्टार्ट हो गया तो पीछे जाने का क्या जरूरत है? What is the need? Yes. जो एडजस्टमेंट की उसे पीछे की होगी सर. Yeah. So it may be for the purpose of determining the avoidance transactions, for detecting any fraud, etc. For all these things. So he has to go back. Look back period is 2 years. Then financial and operational payments for the previous 2 years. So he has to see the financial and operational payments. What is the difference between business operations and financial and operational payments? दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा ना. पहला बोलता है बिजनेस ऑपरेशंस, दूसरे में बोला फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स. एक तो ये कि बिजनेस ऑपरेशंस में मतलब व्हाट वर द डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग द पास्ट 2 years रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है. और फिर उसके बाद में सेकंड टॉक्स ऑफ स्पेसिफिकली द पेमेंट्स, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर द प्रीवियस 2 years. List of assets and liabilities as on the initiation date. Initiation date means the date of filing of the application. And such other matters as may be specified. Then receive and collate all the claims submitted by the creditors to him pursuant to the public announcement. So the question here is, the word written is receive and collate. So whether he can reject, the answer is no. So he will simultaneously maintain both the records, claims submitted, claims admitted. And he will go on asking information till he is satisfied. And if the other party feels aggrieved, they can approach the adjudicating authority. Constitute a committee of creditors, monitor the assets of the corporate debtor. So word is monitor. He is monitoring basically. And manage its operations until a resolution personnel is appointed by the committee of creditors. So if we read this 18D, it seems as if he is on probation. ठीक है. मॉनिटर करना है कि भाई कोई लैप्स ना हो जाए टिल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड, क्योंकि फुल फ्लैज्ड जो पावर आएगी ना वो किसके पास आएगी? आरपी के पास.
ठीक। File information collected with the information utility if necessary. ठीक। Take control and custody of any asset over which the corporate debtor has ownership rights as recorded in the balance sheet of the corporate. So he will go through the balance sheet. He will say what are the assets owned and he will take ownership. He will take ownership and custody. ठीक है। Sometimes the assets of the CD are lying with third parties. ठीक है भाई, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या है कि मान लीजिए एक ही क्लाइंट का काम ज्यादा करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो ट्रक्स भी उसी के प्रेमिसेस में ही खड़े कर देते हैं। ठीक है। सो समटाइम्स द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार आर लाइंग विद थर्ड पार्टीज, सो ही हैज टू टेक कंट्रोल एंड कस्टडी of any asset over which the corporate debtor has ownership rights as recorded in the balance sheet. So custody and control means either physical custody or constructive custody, or with the information utility or the depository of securities or any other registry that records the ownership of assets. ठीक है, including assets over which the corporate debtor has ownership rights, which may be located in a foreign country. Assets that may or may not be in the possession of the corporate debtor, like I gave the example of the trucks which are standing in the yard of the client. Tangible assets, whether movable or immovable. Intangible assets, including intellectual property. Securities, including shares held in any subsidiary of the corporate debtor, financial instruments, insurance policies. Assets subject to the determination of ownership by a court or authority. So what are the assets covered here? Assets are entered in the books. ठीक है, but a court case is going on. One party is saying that asset belongs to me, second party is saying asset belongs to me. So asset subject to the determination of ownership by court or authority. ठीक, so we will take the custody and control to perform such other duties as may be specified by the board. ठीक है, the term shall not include assets owned by third party या assets of any Indian or foreign subsidiary of a corporate debtor. ठीक है, and such other assets as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. अब ये सिर्फ एसेट्स की बात करता है, लाइबिलिटीज का क्या होगा? लाइबिलिटीज की तो कोई बात ही नहीं करता यहां, लिखता कहीं? लायबिलिटी तो सर जिसने लेना अपने आप बताएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सेक्शन 18 में इनडायरेक्ट रेफरेंस आ रहा है। सेक्शन 18 में क्या कह रहा है वो? लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट। ठीक, चलिए नाउ सेक्शन 19। सेक्शन 19, सेक्शन 18 में क्या बोला? सेक्शन 18 में बोला भाई ही कैन टेक कंट्रोल एंड कस्टडी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल रिपोर्ट टू हिम, मैनेजर्स जो भी एम्प्लॉइज हैं दे विल आल्सो रिपोर्ट टू हिम। अब नहीं करते तो क्या करेगा? ही विल अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद द आईआरपी, क्योंकि बोर्ड की पावर किसके पास आ गई है? आईआरपी के पास। नाउ इफ समबडी डजंट कोऑपरेट देन ही विल make an application to the adjudicating authority and adjudicating authority shall by order direct. ठीक है, 20 मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न। अब इसको चलाना कैसे? he has to run it as a going concern. मतलब the idea is that this corporate debtor should come out of this insolvency mess. ठीक है, so वो कैसे होगा? if it is run as a going concern, because if it is run as a going concern then it will result in maximization of the interest of all the stakeholders. ठीक है, the IRP shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage the operations of the corporate debtor as a going concern. ठीक है, अब वो चलाएगा कैसे? कंपनी के पास पैसे तो है नहीं, पैसे नहीं है और वो कह रहे कंपनी चलाओ, कैसे चलाओगे आप? भाई आप हाईवे पर जा रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, आपके स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, क्या करोगे आप? पेट्रोल मांगोगे किससे? जब तक पेट्रोल पंप नहीं आ जाता, यही करोगे ना? तो वो कॉन्सेप्ट है इंटरिम फाइनेंस की। तो पॉइंट नंबर क्या बोलता है? टू रेज इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड over any encumbered property of the corporate debtor
without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property. Now, provided that no prior consent of the creditor shall be required where the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt. So I'll give you a practical example. Suppose the value of the plant and machinery is 8 crores. Okay. One loan is already there, 3.20 crores. So in this situation, whether this IRP can raise interim finance, yes or no? Yes, sir. Yes. Because 3.2 will be multiplied by 2, 6.40. 6, And the value of the security is 8 crores. 8 crore. So he can raise. Whether prior consent of the creditor is required? No. No, it is not required. It says no prior consent of the creditor shall be required where the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt. Whether COC will come into picture? COC at this stage will not come into the picture because these are the management of operations of the corporate debtor by the IRP. So IRP. when the word IRP is being used, that means COC is not yet in place. So as soon as the COC takes the control, the word RP is brought in as against IRP. वहां पर क्या बन जाता है वो RP. So he can appoint accountants, legal or other professionals. Whether he can appoint a sweeper. क्या बोलता है? अकाउंटेंट, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स. मैं कहता हूं भाई एक पीएन अपॉइंट करना है. अब उसने अपॉइंट कर लिया, मैं बोला भाई पीएन तो यहां लिखा ही नहीं है, कैसे अपॉइंट कर लिया तुमने? वो क्या आ जाएगा? वो पॉइंट ई के अंदर कवर हो जाएगा. ई क्या बोलता है? टू टेक ऑल सच एक्शंस एज आर नेसेसरी टू कीप द कॉर्पोरेट डेट एज ए गोइंग कंसर्न. ठीक है. To enter into contracts on behalf of the corporate debtor or to amend or modify the contracts or transactions which were entered into before the commencement of CIRP. Sometimes what happens is that the directors, they enter into fraudulent transactions. ठीक है. By rate बहुत ज्यादा दे दिए उनको, suppliers को, और बाद में उनसे underhand they receive payment in cash. So such contracts can be modified by the IRP. He can raise interim finance वाला point हमने देख लिया. To issue instructions to personnel of the CD as may be necessary for keeping the corporate debtor as a going concern and to take all such actions as are necessary to keep the corporate debtor as a going concern. Now another point. He is running the business as a going concern. So whether he can appoint the director, किसी डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है क्या यहाँ पर, या नहीं कर सकता? No, sir. He cannot. Because their powers stand suspended. But if we read part 3, which deals with bankruptcy, so during bankruptcy, the bankruptcy trustee can appoint the bankrupt to oversee the operations. Because वो वहां पर क्या है कि separate legal entity वाली concept नहीं है. But that is an individual or a partnership firm. So there it is permissible, but here it is not permissible. Now section 21. Section 21 talks of the committee of creditors. So it says the IRP shall, after collation of all claims received and determination of the financial position, constitute a committee of creditors. The committee of creditors shall comprise all financial creditors of the corporate debtor, provided that a financial creditor or authorized representative of the financial creditor referred to in subsection 6 or subsection 6A or subsection 5 of section 24, if it is a related party of the corporate debtor, shall not have any right of representation, participation, or voting in a meeting of the committee of creditors. So if it is a related party, okay, so then it has got no right of representation, participation, or voting. So that means the authorized representative also, okay, of the financial creditor, he should also not be a related party of the CD. Provided further that the first proviso shall not apply to a financial creditor regulated by a financial sector regulator. Suppose it is a banker. Okay. If it is a related party of the corporate debtor,
solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares prior to the insolvency commencement date. So a banker is there which is holding certain equity shares, which makes him the related party, so that this clause will not apply. Then subject to subsection 6 and 6A, where the corporate debtor owes financial debt to two or more financial creditors as part of consortium or agreement. Now, say there are four bankers, banker A, B, C, D. It says each such financial creditor shall be part of the committee of creditors. So all these bankers A, B, C and D. So they will be part of the committee of creditors. And their voting right shall be determined on the basis of financial debts owed to them. Okay? Now suppose the financial debt, suppose banker A has filed a claim of 10 crores. But his claim has been admitted for 8 crores. So then what shall be his vote share? It will be based on 10 crores or 8 crores? 8 crore, sir. 8 crores, right. Where any person is a financial, there could be a situation where a person is a financial creditor as well as an operational creditor. Then such person shall be a financial creditor to the extent of the financial debt owed by the CD and shall be included in the committee of creditors with voting share proportionate to the extent of financial debts owed to such creditor. And such person shall be considered to be an operational creditor to the extent of the operational debt. Okay? Next, where an operational creditor has assigned or legally transferred any operational debt to a financial creditor, the assignee or transferee shall be considered as an operational creditor to the extent of such assignment or legal transfer. Now, let us understand this clause by way of an example. As we know, in section 9, an operational creditor can file an application. But the minimum amount of default is 1 crore rupees. Now suppose there are two operational creditors. One operational creditor is having debt of say 60 lakhs. Another operational creditor is having debt of 40 lakhs. So together they owe a debt of 100 lakhs. So creditor A says, operational creditor A says to B that I assign my debt to you, so that the combined debt will be 1 crore. So whether they will be able to file the application? Yes, sir. No, they will not be able to. Why? The answer is given in section 9. Section 9 says an operational creditor. So he has to singly file the application. Otherwise, all the operational creditors will join in this way. So section 9, if we see what it says, if the operational creditor, an operational creditor on the occurrence of a demand. So the word used is an operational creditor. But in section 7, if you see, explanation says 7 itself, it says a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors. So joint application is there in case of section 7, but not in case of section 9. So directly they cannot proceed. And the law of interpretation is that what cannot be done directly cannot be done indirectly. ठीक है भाई, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते. तो ये नहीं भाई एक ऑपरेशनल क्रेडिटर दूसरे को असाइन कर दे तो कर पाएंगे. द आंसर इज नो, फिर भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, देयर आर केस लॉज ऑन दिस. अदरवाइज तो सारे ऐसे कर लेंगे. चलिए. And the character also will not change. Suppose an operational creditor has assigned or legally transferred any operational debt to financial creditor. ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपना डेट असाइन कर दिया फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो क्या वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहेगा या फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा? ऑपरेशनल रहेगा सर. ऑपरेशनल ही रहेगा. तो कैरेक्टर विल नॉट चेंज. ठीक है. द असाइनी और ट्रांसफरी शैल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ सच असाइनमेंट और लीगल ट्रांसफर. Where the terms of the financial debt extended as a part of consortium or arrangement of syndicate facility provide for a single trustee. ठीक है, कंसोर्टियम फंडिंग है. इन कंसोर्टियम फंडिंग उसमें प्रोविजन है सिंगल ट्रस्टी का. अब यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर तो बोल रहा है कि भाई
all the financial creditors if they are part of a consortium. अब वहां प्रोविजन क्या है, सिंगल ट्रस्टी का है। तो इस केस में क्या होगा, सो ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर मे ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। ठीक है, ट्रस्टी एजेंट तो वही रहा, लेकिन उसको उसने अपनी भाषा समझा दी, उसको ऑथराइज कर दिया कि भाई मेरे बिहाफ पर आप इस तरह से एक्ट करोगे। ठीक है, देर आर 4 बैंक्स A, B, C, and D, और उसमें जो टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट है उसमें प्रोविजन है सिंगल ट्रस्टी का। देर इज ए प्रोविजन फॉर ए सिंगल ट्रस्टी, मिस्टर रामलाल। सो नाउ A, B, C, and D will individually tell Ramlal how to vote in respect of the share on their behalf in the COC मीटिंग। मतलब ये नहीं है कि वो चारों अलग अलग अपॉइंट करेंगे, या तो वो चारों चले जाए मीटिंग में खुद। ठीक है, क्या बोलता है, ये where the corporate debtor owes financial debts to two or more financial creditors as a part of consortium or an agreement, each such financial creditor shall be a part of the committee of creditors। पहला तो पॉइंट ही। सेकंड में क्या बोला, सेकंड में बोला सिंगल ट्रस्टी का प्रोविजन है, तो सिंगल ट्रस्टी में उसको ऑथराइज कर देंगे। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर, अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट हिज ओन कॉस्ट। ठीक है, by sometimes the bankers feel that they are not equipped to handle all these things, so they may appoint an insolvency professional who has got knowledge of all these things, but the cost will be borne by them। ठीक है, or exercise his right to vote to the extent of his voting share with one or more financial creditors jointly or separately। ठीक है, ये तो हो गया 6। नाउ 6A, 6A क्या बोलता है, वेरे फाइनेंशियल, वीरेन परिहार जी, एनी क्वेश्चन ऑन 6? No, sir. Now 6A, but let me ask you a few questions। Suppose there is a joint lending, ठीक है, Yes, sir. there are four financial creditors A, B, C, and D। So whether all can come to the meeting or only one can come? All can come, sir. All All can can. come. But suppose the terms of the financial debt, so they provide for a single trustee. So then in that case, what will happen? They will appoint a one common trustee. Right. Interest. So they will instruct him to act on his behalf. So all these persons, A, B, C, and D, they will instruct that single trustee or agent to act in a particular manner because voting is to take place. So A will say that, okay, you vote in favor of the resolution. B may say you vote against the resolution. C may say that you abstain from the meeting. D may say you come to the meeting but you don't speak anything. So they can ask him to represent him। ठीक है, trustee will be the same, agent will be the same, but they will individual instructions will be given। ठीक है, ये है 21(6). Now 21(6) where a financial debt is in the form of securities or deposits and the terms of the financial debt provide for the appointment of a trustee or agent to act as authorized representative for all the financial creditors। Suppose a company has issued redeemable convertible debentures, ठीक है, and the terms of the debenture trust deed, they provide for the appointment of a debenture trustee। So in this case, whether all such debenture holders will be able to appoint their authorized representative, the answer is no। We have to see the terms। ठीक है, it says if the terms of the financial, so we have to see the terms of the debenture trust deed। So whenever debentures are issued, so there must be terms of the financial debt। So they may say that, okay, a trustee or agent shall be appointed। So such a trustee or agent, he will act as AR for all the financial creditors। So these debenture holders, these deposit holders, they cannot appoint their own trustee or agent। So there will be, so how this will be decided? It will be as per the terms of the financial debt। वहां जो लिखा है वैसा ही हो। ठीक है, सेकेंड is owed to a class of creditors। ठीक है, कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर है तो उस केस में क्या होगा, द IRP shall make an application to the adjudicating authority।
along with the list of all financial creditors containing the name of an insolvency professional. अब मान लीजिए कि होम बायर्स हैं या कोई और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, अंडर राइटर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, देयर कुड बी सो मेनी। ठीक, एक तो सारी लिस्ट लगा देगा, लिस्ट के साथ में ही विल contain the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of the committee of creditors। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग से पहले ये अपॉइंट हो जाएगा। नाउ वेदर दिस मेंशन ऑफ इसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कैसे होगा, दिस इज गिवन इन रेगुलेशन। ये रेगुलेशन में दे रखा है। रेगुलेशन क्या है, 4A है मेरे ख्याल। रेगुलेशन 4A टॉक्स ऑफ, रेगुलेशन 4A ऑफ CIRP रेगुलेशंस, चॉइस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट में भी इसका रेफरेंस जाता है। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं एक बारी। एक तो ये है 4A। 4A क्या है, चॉइस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। हाउ ही विल बी सेलेक्टेड, द IRP विल एग्जामिन द बुक्स। On an examination of the books of account and other relevant records, the IRP shall ascertain the class of creditors. ठीक है, and then there are certain qualifications and disqualifications. He will identify 3 insolvency professionals. उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ना रिलेटेड पार्टी होने चाहिए। They should have their address as registered with the board in the state or union territory which is the highest number of creditors. अगर नहीं है तो 7 वाली स्टेट से ले लेगा। ठीक है, और पब्लिक अनाउंसमेंट में भी इसका रेफरेंस है। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या बोलता है, पब्लिक अनाउंसमेंट में बोलता है कि अगर आप पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म देखें तो वहां पर क्या है, 3 नाम दे देगा वो कि भैया इनमें से सेलेक्ट कर दो। ये देखिए पॉइंट नंबर 13 क्या बोलता है, नेम्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाइड टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास। 3 नेम्स ऑफ इच, 3 दे देगा और 3 में से इसको अपना सिलेक्शन करना है। जिसका भी हाईएस्ट होगा उसी को इलेक्ट करते, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, चलिए तो मिस्टर साहब समझ में तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? हाँ जी मिस्टर सैफ, आर यू देयर? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बंद करके चले जाते हैं, सोचते हैं यार रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे। चलो कोई बात नहीं। सुदर्शन नामू जी, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? हाँ यस सर। ओके ओके ओके, सो जस्ट अ मिनट। तो सेक्शन 20, another situation could be if a guardian, executor or administrator has been appointed, then such person shall act as authorized representative on behalf of such financial creditors. ठीक है, but the point of fees is there only in case of authorized representative which is appointed by the adjudicating authority. ठीक है, for others they have to pay their fees. ठीक है, and such authorized representative under clause A or B or C shall attend the meetings of the committee of creditors and vote on behalf of each financial creditor to the extent of his voting. The remuneration payable, इसका remuneration कौन देगा? ठीक है, वो कहता है ए और सी में कौन होगा। ए और सी में तो आप टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट देख लीजिए या रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए। सपोज देयर इज ए डिबेंचर ट्रस्ट डीड, तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा होगा डिबेंचर ट्रस्टी का पैसे कौन देगा, उसके हिसाब से पेमेंट करना। और क्लॉज बी में क्या होगा, क्लॉज बी ये वाला जो पब्लिक अनाउंसमेंट में दिया है, जो इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ द बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ वोटिंग and determining of the voting share in respect of the financial debts covered under 6 and 6.
ठीक है। Subsection 8. Save as otherwise provided in this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 51% of the voting share of the financial creditors. ठीक है, कितना है? Not less than 51%. Provided that where a corporate debtor does not have any financial creditors, the committee of creditors shall be constituted and shall comprise of such persons to exercise such functions in such manner as may be specified. So there is a regulation for it. Regulation says that in case there are no financial creditors or all the financial creditors are related parties, then 18 largest operational creditors in terms of value plus one representative of workmen and one representative of employees shall constitute the COC. The committee of creditors shall have the right to require the RP to furnish any financial information in relation to the corporate debtor at any time during the CIRP. So COC also has the right. So COC may ask RP to furnish any financial information in relation to the corporate debtor. ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या लेगा? क्या ऑप्शन दे देगा? द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल हैव द राइट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? क्वेश्चन आपसे पूछेगा द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द रेजोल्यूशन पर्सनल टू फर्निश ऑप्शन ए एनी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी एनी अदर इंफॉर्मेशन, इस तरह से, है ना? तो हमें यहाँ क्या है? एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। The resolution professional shall make available any financial information so required by the committee of creditors under subsection 9 within a period of 7 days of such requisition. ठीक है, तो उसको देनी है। Now section 22. Section 22 क्या बोलता है? Appointment of RP. So first meeting shall be held within 7 days of the constitution of the committee of creditors. और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेंगे? फर्स्ट मीटिंग में बाई मेजोरिटी वोट ऑफ नॉट लेस देन 66%, या तो उसी को कह देंगे भाई इसी आईआरपी को आरपी बना दो, या रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर रिप्लेस करना है तो बोर्ड को एप्लीकेशन लगा देंगे, बोर्ड फिर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ करके और ये नए को अपॉइंट कर देंगे। नाउ 23 टॉक्स ऑफ रेजोल्यूशन पर्सनल टू कंडक्ट CIRP। अब यहां पर वर्ड क्या आ गया? अब ये हो गया रेजोल्यूशन पर्सनल। पहले हमने क्या पढ़ा था? IRP, अभी हो गया RP। सब्जेक्ट टू सेक्शन 27, द रेजोल्यूशन पर्सनल shall conduct the entire CIRP and manage the operations of the corporate debtor during the CIRP period, provided that the resolution personnel shall continue to manage the operations of the corporate debtor after the expiry of the CIRP period until an order approving the resolution plan or appointing a liquidator is passed। ठीक है भाई, दो ही बातें होंगी, या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा या लिक्विडेशन हो जाएगा, है ना? तो तब तक उसको काम करते रहना है आरपी को। द रेजोल्यूशन पर्सनल shall exercise powers and perform duties as are vested or confirmed on the IRP under this chapter। ठीक है, क्या मतलब लिख दिया? इसमें ये लिख दिया कि भाई जो IRP की ड्यूटीज है ना वो भी ये करता रहेगा। इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ ए RP अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 22 द IRP शैल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो IRP जो है RP को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। नाउ 24 टॉक्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सबसे पहली बात, कंडक्ट कौन करेगा? ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट करेगा आरपी। ठीक है, क्या वेदर दे कैन बी हेल्ड इन पर्सन और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बोथ। ठीक है, और कहां पर होगी ये मीटिंग? मीटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, कहीं पर भी हो सकती हैं, सीडी के प्रीमिसेस में भी हो सकती हैं, आरपी के प्रीमिसेस में भी हो सकती हैं, किसी होटल में भी हो सकती हैं, कहीं पर भी हो सकती हैं। ठीक, the resolution personnel shall give notice of each meeting of the committee of creditors to members of the committee of creditors, including authorized representatives referred to in subsection 6 and 6A of section 21 and subsection 5।
ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ सीओसी, मेंबर्स ऑफ सीओसी कौन है, जो भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 6 एंड 6A ऑफ सेक्शन 21। सपोज देर आर 500 डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, अब उन डिबेंचर होल्डर्स का एक डिबेंचर ट्रस्टी है, तो क्या 500 के 500 डिबेंचर होल्डर्स को भी नोटिस जाएगा मीटिंग का, या सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टी को जाएगा? डिवेंचर ट्रस्टी हो जाए सर। राइट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ द सीडी एज द केस, इनको भी नोटिस जाना है, ठीक है। Operational creditors or their representatives if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the debt। मतलब ये कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं नॉर्मली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ सीओसी, बट इफ द अमाउंट ऑफ देयर एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट, ठीक है, टोटल डेट आपका है 100 करोड़, ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का डेट है 10 करोड़ या मोर, ठीक है, तो इन दैट केस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओसी विल ऑल्सो अटेंड द मीटिंग्स, ठीक है, ऑल्दो ही डजंट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग, ठीक है। द डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, ठीक है, ऑफ जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है 50 हो ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, सप्लायर्स, सबका मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव आना है, ठीक है। एज रेफर्ड टू सबसेक्शन 3 may attend the meetings of the committee of creditors but shall not have any right to vote in such meetings, provided that the absence of any such director, partner or representative of operational creditors as the case may be shall not invalidate proceedings of such meeting, ठीक है, उससे इनवैलिडेट नहीं होंगी, कोई नहीं आया मान लो, क्योंकि वैसे भी उनको राइट ऑफ वोटिंग पार्टिसिपेशन तो है नहीं। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6A and 6B of section 21, any creditor who is a member of the committee of creditors may appoint an insolvency professional other than the resolution professional, ठीक है। पहले तो बोल रहा भाई सेक्शन 21 का देख लो, 6A और 6B। 21 के 6 में क्या लिखा था, 21 के 6 में तो लिखा था कि भाई ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन अटेंड द मीटिंग्स, सो इफ द टर्म्स ऑफ द finance they provide for a single trustee, so every banker will instruct the single trustee, ठीक। फिर डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, गार्जियन, एक्सिक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, all these concepts we have read in section 21, 6 and 6A, but subject to that any creditor who is member of the committee of creditors may appoint an insolvency professional other than the RP to represent, ठीक है, किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई सप्लायर है, ठीक है, अब वो सप्लायर भी अपना कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट वो खुद ही बियर करेगा, ठीक। वोटिंग राइट जो होगा, वोटिंग राइट होगा असाइंड टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेट्स ओड टू सच क्रेडिटर, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल डिटरमिन दी वोटिंग शेयर, यहां पर बता दिया कि डिटरमिन कौन करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, टू बी असाइंड टू ईच क्रेडिटर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कि मिनिमम 33% कोरम होना चाहिए, ठीक है ना, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है मीटिंग के लिए, कौन नहीं कर सकता, ये सारी बात। नाउ ड्यूटीज ऑफ आरपी, it shall be the duty of the RP to preserve and protect the assets of the corporate debtor, including the continued business operations of the corporate debtor, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले he has to take immediate custody and control of all the assets of the corporate debtor, including the business records of the corporate debtor, ठीक है। Represent and act on behalf of the corporate debtor with third parties, कोई आर्बिट्रेशन का केस है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, आरपी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कोई सेटलमेंट होनी है, एक्सरसाइज राइट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और आर्बिट्रेशन
प्रोसीडिंग्स। अब आप कहोगे भाई 14 में तो आपने कह दिया कोई प्रोसीडिंग चल ही नहीं सकती, तो जब चल नहीं सकती तो ये कौन सी प्रोसीडिंग की बात कर रहा है अनिल जैन जी? भाई हमने सेक्शन 14 में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, बट यहां हमें क्या ध्यान में रखना है? राइट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, कोई ऐसा कोर्ट केस हो सकता है जिसमें इसको फायदा हो रहा हो कॉर्पोरेट डेटर को। मान लो कोई रिफंड मिलना है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसमें कौन जाएगा? ये जाए। जीएसटी का रिफंड मिलना है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सीटी। जीएसटी डिपार्टमेंट में कौन जाएगा? आरपी जाएगा, या इसका कोई प्रोफेशनल जाएगा। ठीक है, चाहे कोई जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। रेज इंटरिम फाइनेंसेस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 28। कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो ये रेज करेगा। अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स, मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, convene and attend all meetings of the committee of creditors, prepare the information memorandum in accordance with section 29। information memorandum क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है which showcases the assets and liabilities including contingent liabilities of the CD। ठीक है, which is shown to the prospective resolution applicants। भाई कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान यू हैव टू इनवाइट, तो आपको बताना पड़ेगा ना कंपनी के पास क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। तो वो, क्योंकि जो बुक्स हैं, बुक्स में तो आपको देखो हिस्टोरिकल वैल्यू है, अब यहाँ 29 में तो वो सारी चीजें बताएगा ना, बुक वैल्यू भी बताएगा, मार्केट वैल्यू भी बताएगा, है ना, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बताएगा, कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो वो सब चीजें भी बताएगा इसके अंदर, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ही कैन टेक डिसीजन ऑन दैट बेसिस। Invite prospective resolution applicants who fulfill such criteria as may be laid down by him with the approval of COC, having regard to the complexity and scale of operations of the business of the corporate debtor and such other conditions as may be specified by the board to submit a resolution plan। मतलब क्या भैया? देखो आपको पर्पस क्या है? आपका पर्पस है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन यू विल बी इनवाइटिंग प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। अब क्या हर एक एरे गैरे को इनवाइट कर लोगे? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे? विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यू विल डिसाइड द क्राइटेरिया, कि भाई देखो ऐसा है, हम ऐसा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट चाहते हैं जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो, या ऐसा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो हु हैज ऑलरेडी हैंडल्ड सच मैटर्स इन द पास्ट। ठीक है, सो हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, द आरपी shall डिवाइस ए क्राइटेरिया। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक, देन प्रेजेंट ऑल रेजोल्यूशन प्लान्स एट द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, फाइल एप्लीकेशंस फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस एंड सच अदर एक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड। ये है आपका 25 सेक्शन 25A। सेक्शन 25A क्या बोलता है? सेक्शन 25A बोलता है कि अब देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में एक तो इंडिविजुअल क्रेडिटर्स आ गए, सपोज 4 बैंक्स आर देयर, वो तो अपने अपना वोटिंग कर देंगे। बट सपोज देयर इज ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग कैसे होगी? ये उसकी बात करता है 25A। ठीक है, बिकॉज पहला क्वेश्चन, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैज कम टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, सपोज देयर आर से 5000 होम बायर्स, नाउ 5000 होम बायर्स हैव सेलेक्टेड वन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट में उसका नाम दिया हुआ था, उसको हाईएस्ट वोट मिल गए एंड ही वाज इलेक्टेड एज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब क्या ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से वोट दे सकता है सीओसी मीटिंग में, जो उसका मन करेगा? क्या हो भाई, मीटिंग में तो ये आके बैठ गया, अब ये वोट कैसे करेगा? He will act as per the instructions of the financial creditors he represents। ठीक है, अगर मान लो इसको कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं तो क्या करेगा? तो ये वोट नहीं करेगा। ठीक है, ये सब बातें लिखी है, प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस। अब मान लो वोटिंग इंस्ट्रक्शन उसने कुछ दिया, ये वोट कुछ कराया,
उसके लिए भी क्या प्रोविजन है? द आंसर इज यस। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, ये आपको मिल जाएगा, द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall file with the committee of creditors any instructions received by way of physical or electronic means। तो जो इसको इंस्ट्रक्शन मिली है ये फाइल करेगा, उसके हिसाब से ही वोट करेगा। ठीक है। अब इसमें दो तरह के वोट होंगे। कैसे कैसे? पहला, जो नॉर्मल डिसीजंस है, नॉर्मल डिसीजंस में तो क्या करना है कि अगर मोर देन 50% के बेसिस पे वो वोट कर देगा, हु हैव कास्ट देयर वोट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। सपोज देर आर 5,000 होम बायर्स। ठीक है। आउट ऑफ 5,000 होम बायर्स ओनली 4,000 हैव एक्सप्रेस्ड देयर desire to the AR। AR will get in touch, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। सो 4,000 have instructed, out of 4,000 से 3,000 have voted in favor of the resolution। 3,000 ने बोला AR को कि भाई यू वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है। और 1,000 ने बोला अगेंस्ट में वोट करना। ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा कि दिस वोट इज फॉर 5,000 फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो भी उनका वोट शेयर है, ये 5,000 का वोट मान लिया जाएगा। ठीक है। तो मोर देन 50% ऑफ दोज हु हैव कास्ट देयर वोट। क्लियर है पॉइंट ये? अनिल जैन जी, पॉइंट क्लियर है नहीं? वीरेंद्र हेलो। परिहार, हाँ, यस सर। वीरेंद्र परिहार जी, पॉइंट इज क्लियर या नहीं? क्लियर सर, क्लियर क्लियर है ना? अच्छा, चलिए सर। नेक्स्ट। लेकिन अगर कोई 12A का रेजोल्यूशन है, 12A मतलब विड्रॉल, तो द ऑथराइज हाँ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर मोर देन 50% वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा इन केस ऑफ 12A। द सर, ऑथराइज 90। रिप्रेजेंटेटिव shall cast his vote in accordance with the provisions of subsection 3। सबसेक्शन 3 में क्या बोला? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलो। 3A में क्या बोला? मोर देन 50% मीन्स 100%। ठीक है। चलिए, और ये इंस्ट्रक्शंस पहले फाइल कर देगा, ताकि ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाए, अपनी मर्जी नहीं चलानी। अगर इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली तो चुपचाप बैठेगा। ये भी लिखा है बात। कहां लिखा है? इफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर डज नॉट गिव प्रायर इंस्ट्रक्शंस थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच क्रेडिटर। ये नहीं अपना दिमाग लगा ले। ठीक है। सेक्शन 26 बोलता है एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट टू इफेक्ट CIRP सेपरेट चलेगा, अवॉइडेंस एप्लीकेशन सेपरेट चलेगा। 27 रिप्लेसमेंट की बात करता है। रिप्लेसमेंट में क्या है कि भाई कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। इससे पहले 22 था। 22 में बोला था कि भाई अपॉइंटमेंट, ये था जब फर्स्ट COC मीटिंग। और 27 में क्या बोला? एट एनी स्टेज। 4 मीटिंग हो गई, 4 मीटिंग में RP चल रहा है, 5वीं में उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, वेदर दे कैन डू, आंसर इज यस। ठीक है। फिर 28 बोलता है अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस। तो इसको कल करते हैं, है ना? इसको नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, कल करते हैं इसको, सेक्शन 28। सो लेट अस स्टॉप हियर। 27 तक हमारा आज कंप्लीट हो गया।